Hello, how are you students? In the lecture number first of standard 6th of subject science, we had started the chapter number 11, and here in the lecture number 2 we are going to discuss about more about the measurements. So in this particular chapter we will learn about the importance of estimation, motion, types of motions, and the examples related to the motions. So what we had completed in chapter number 11, lecture 1, that we will revise in within 2 to 3 minutes. So in the first lecture we will just completed what is measurement. So measurement can be defined as to measure the quantity. For measuring any quantity, measurement is used. After that we had discussed about the classifications of measurement. Classifications of measurements in the sense on the traditional basis and on the standard basis. In the traditional basis, there are the total I think 4 to 5 types of units: cubit, fathom, then etc., that we had discussed in lecture number 1. Now after that we had discussed about the standard units. Standard units means length is measured in meter, time is measured in second, mass is measured in kilogram. That we had already discussed in topic number 2. After that we had completed the unit conversion of units from one to another, from smaller to bigger or bigger to smaller. That portion we had completed in the first lecture. Now in this lecture, firstly we will start with the importance of measurement and estimation. So why it is necessary, measurement, why it is necessary, and what is estimation? So first of all, this should be clear in your mind. What is estimation? So estimation, we can also say the similar word, this is approximation, or this is approximation, or we can say this is the calculation of rough value. किसी भी चीज़ का अगर रफ वैल्यू आप निकालते हो, सपोज यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट पुट किया एंड मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. सो अप्रॉक्सीमेटली विदाउट मेजरिंग इट you can say that is 5 kg or 4 kg. So this is the estimation. This word is known as a estimation, means we are deciding the rough value of that quantity. And why estimation is necessary? If we do the estimation of any quantity, we can easily find the accurate quantity of that object. सो एस्टिमेशन एंड एक्यूरेसी में बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होता है. दैट्स वाई एस्टिमेशन इज नेसेसरी. कोई भी क्वांटिटी अगर मेजरेबल नहीं है, सो इन दैट केस वी आर डूइंग जस्ट दैट बाय एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन वी कैन से. बाय द एस्टिमेशन वी विल गेट द रफ आइडिया अबाउट एनी क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी की रफ आइडिया हमें वहाँ पे पता चलती है, फॉर अबाउट मास, फॉर अबाउट लेंथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड फ्रॉम रफ आइडिया ऑफ एनी क्वांटिटी वी कैन कैलकुलेट एक्यूरेट क्वांटिटी. सो रफ आइडिया अगर हमें मिल जाए, सो वहाँ से मेज़र करके हम एक्यूरेट क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं. सो दिस इज़ द एस्टिमेशन and it is necessary in day to day life. The quantity which are not measurable, जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते, सो अप्रॉक्सीमेशन की वजह से उसका वहाँ पे मेजरमेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, सो द डिस्टेंस बिटवीन राजकोट टू जूनागढ़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर. दैट वी आर नॉट गोइंग टू मेजर दैट डिस्टेंस. This is the approximation, this is the estimation. Now another topic is, and it is motion. So in the measurement, motion is also included, and motion is completely different from this topic, measurement. So what is motion?
what motion represent? If the position of object is changing continuously with respect to time, then we can say object is in motion. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर पाथ एंड यहाँ पे एक बॉल लिया, टाइम 2 सेकेंड हुआ, डिस्टेंस मेज़र किया तो दिस पॉइंट से उसका डिस्टेंस था 5 मीटर। डिस्टेंस यहाँ पे मेज़र किया, डिस्टेंस इज़ 5 मीटर फ्रॉम दिस वन। एंड उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड द ऑब्जेक्ट रिच्ड हियर and distance measured from here to here, and this is 20 meter. So means the position of the object is continuously changing with respect to the time. समय के साथ उसकी पोजीशन में क्या हुआ, चेंज हुआ. So this is known as a motion. So we can say this ball or this object is in motion. Now the types of the motions, what are the types of the motions and how it is characterized, how it is classified, that we will see in this particular particular topic. So I think this idea is clear in your mind, what is motion. सपोज यू आर मूविंग, अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, बाहर निकले आप एंड बाहर निकलने के बाद बाइक स्टार्ट की, बाइक स्टार्ट करके आगे गए, मीन्स यू आर चेंजिंग योर पोजीशन कंटिन्यूसली, मीन्स यू आर इन मोशन. Second is types of motion. So motion can be categorized as a linear or translation motion. Linear motion जो एकदम लीनियर पाथ पे होता है, दिस इज अकर्स इन द लीनियर पाथ. दिस टाइप्स ऑफ मोशंस आर लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन. सेकेंड इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन. सर्कुलर मीन्स you are moving around any particular point or any particular object. This is your circular motion or rotational. Periodic motion, in a periodic motion you are moving from maximum to minimum, from maxima to minima with respect to one point. This is your periodic motion. And non-periodic motion, it is generally also categorized as a random motion, we can say. So these are the types of motion. Let us study about more in detail one by one. Now first one is linear or translation motion, we can say. So suppose a car is moving on a road, on a straight line road. So this is the motion, this type of motion, the motion which occurs on the linear path. This is known as a linear motion or straight translation motion. So it is a straight line motion, we can say, and it is categorized as a two types, rectilinear and curvilinear. So what is rectilinear? Rectilinear means from one point you are moving in a straight line direction, while in the curvilinear you are moving in this type of curve. So this will be also this distance, this is your motion, and this motion is considered as a curvilinear. For example, फुटबॉल को यहाँ पे लिया और बास्केटबॉल को लिया, बास्केटबॉल के टूवर्ड्स थ्रो किया. So the motion of the ball is curvilinear motion. So this is the example of curvilinear. So this is your linear or translation motion. Second is circular or rotational motion. So circular rotational means an object which is moving around any particular point. So suppose this is my point, and this point, according to this point, here one object is available without changing its distance, is constantly moving. So this motion is considered as a circular or rotational motion.
फॉर एग्जांपल अगर रोटेशनल मोशन आपको देखना है, सो रुमाल लो, रुमाल के दो एंड्स को पकड़ो, एक हैंड को होल्ड करो एंड दूसरे हैंड को रोटेशनली अगर आप मूव करो, सो दैट टाइप ऑफ मोशंस आर सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। बिकॉज इन दैट पॉइंट, एक पॉइंट के कंपैरिजन में दूसरा पॉइंट अपनी डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, डिस्टेंस रिमेन सेम एट थ्रू आउट, सब जगह डिस्टेंस इक्वल होगा, इन ऑल द डिरेक्शंस डिस्टेंस आर सेम। सो दिस टाइप्स ऑफ मोशंस आर सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशंस। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ फैन ब्लेड, फैन की जो ब्लेड होती है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। मोशन ऑफ जायंट व्हील इन फेयर्स, मेला के अंदर अगर आप वहाँ पे देखो सो जायंट व्हील होते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। नाउ द थर्ड टाइप इज एंड इट इज पीरियोडिक मोशन। So in a periodic motion, this is our fixed surface that I am assuming, this is fixed and this is thread joined by a ball. Now when I flick it just by touch, so I know it starts moving in this direction. After reaching such a height, it moves in backward direction, again moving, again in this direction, again in this direction. So these type of motions are considered periodic motion. According with respect to a point, means according with respect to this point, the ball is moving continuously around an axis, or it is complete, it is doing oscillation, we can say. This is the example of periodic motion. Periodic motion is also known as a oscillatory motion और oscillation motion, because एक पॉइंट के रिफरेंस में अगर आप वहाँ पे घूमते रहो मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। एंड फॉर एग्जांपल द क्लॉक वॉल कंटेन्स द क्लॉक वॉल कंटेनिंग इनसाइड, नीचे अगर क्लॉक वॉल के आप देखो सो वहाँ पे जो होता है इट इज़ मूविंग इन दिस मैनर एंड दिस इज़ योर पीरियोडिक मोशन, दिस रिप्रेजेंट्स योर पीरियोडिक मोशन। नाउ द नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक इज अपोजिट टू द पीरियोडिक। In this type of motion, any reference point or any axis is not required. It is randomly motion, we can say. It is random motion in all the directions. For example, flying of a bird in the sky. अब वो तो वहाँ पे फिक्स नहीं होगा, बर्ड यहाँ से यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है, means it is random motion. So this is your random motion, non-periodic motion. Now here work for you, and few questions are given to you that you have to complete in your workbook. Here first question is write down the importance of estimation. Second question is define motion and its type, and third write down the motion in detail. So सब motions को आपको describe करना है. So this is all about your this topic, types of motion and the importance of estimation. In the next lecture we will move on the another important topic. Thank you.